बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we learn how to change admin user password in Oracle Apex 21.2 with database 19C in Windows 10 इंशाअल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से एडमिन यूज़र पासवर्ड चेंज किया जाता है Oracle Apex 21.2 में डेटाबेस 19C के साथ Windows 10 में। उसकी वजह जो है वो कुछ भी हो सकती है। आपकी जो इंटरनल वर्क स्पेस है वो बंद हो गई है, या आप किसी भी वजह से पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं। द रीज़न कुड बी एनीथिंग दैट योर इंटरनल वर्क स्पेस हैज़ लॉक और you want to change a password for any other reason. Now open command prompt and reach where Apex folder is available. अब हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ पे Apex का फोल्डर मौजूद है। Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे sqlplus space /nolog. Now we will run this command. Now connect with sys user. अब कनेक्ट होंगे sys के यूजर से। Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे The username will be admin and email will remain same. username admin रहेगा, email वही होगी जो पुरानी है। Provide password. Provide a new password from your choice. अब आप नया पासवर्ड दे दें अपनी मर्जी से। So now the password, new password is available. अब नया पासवर्ड जो है वो मौजूद हो चुका है। First we enter an old password. पहले हम पुराना पासवर्ड डालेंगे ताकि चेक करें। अब हम नया पासवर्ड डालेंगे। Now we will enter a new password. So now it is available. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.